Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm another your educator and today we are going to do the summary of the chapter banking. Okay, we have already completed and I have given you the explanation in detail of each and every important topic. So now what we're going to do, the summary part. Okay, so first of all, without any further delay, let's start here. Meaning of commercial banks. It is an institution which performs the functions of accepting deposits and granting loans and making investment with the aim of earning profit. Okay, so meaning of commercial bank, there are several banks like PNB, State Bank of India, and so on. Okay. Then functions of commercial bank. In details, I have already given you the videos. Okay, uploaded the videos. You can go through that. But in this way, you can just give the flow chart. Okay, with the help of the flow chart, you can give in the answers also. Okay, primary function accepting deposit and advancing loans. Secondary functions overdraft facility, discounting bills of exchange, agency functions, and general utility functions. With this, we come to the end of this part. That is the commercial banks, right? Now, what is the money creation and or credit creation? It's very important. सेपरेट वीडियो आपका इसके ऊपर मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको प्लीज देखिएगा जरूर, ठीक है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट. यानी कि जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं कमर्शियल बैंक्स में, वो एग्जैक्टली वो लोन के तौर पे देता है, बट उससे क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा फार एक्सेस वो लोन्स पे देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1000 जमा किए हैं तो वो उसको इतना ज्यादा उसका चेंजेस करेगा कि फॉर एग्जांपल वो आपका मल्टीप्लायर करते रहेगा, मल्टीप्लाई इतनी बार करता है कि वो बहुत ज्यादा उसे जनरेट करता है. ओके, वही पैसे को बहुत टाइम्स मल्टीपल टाइम्स को जनरेट कर लेता है. ओके, तो इसका भी डिटेल वीडियो है, यू कैन गो थ्रू दैट. दैट इज 2 अजम्पशंस आपको याद रखने हैं इसमें. द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट and is termed as banks. Okay, and then all receipts and payments are routed through banks. The meaning of LRR, that is, it is a legal compulsory for the banks to keep a certain minimum fraction of the deposits as reserve. The fraction is called a legal reserve ratio or reserve deposit ratio or reserve ratio and is fixed by the central bank. Okay. Then explanation of the table. This table, that is 1000 मैंने अगर डिपॉजिट किया है तो वो LRR, that is रिजर्व के तौर पे करेगा 20% इसका 1000 का रखेगा, that is 200, और लोन कैसे दे देगा 800 का. देन अगेन दिस लोन, जो लोन उसने दिया उसको फिर क्या करेगा वो डिपॉजिट, बिकॉज वी आर assuming that there is only that is all the payments and receipts are routed through banks. Okay, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम ये 800 को फिर से डिपॉजिट के तौर पे रखेंगे, एंड देन अगेन 800 का 20% इज 160 एंड द रेस्ट विच इज लेफ्ट फ्रॉम 800 टू 160 इज 640 एज अ लोन. अगेन ये ट्रीट करेंगे. देन 640 को अगेन ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका इनिशियल डिपॉजिट जो है आपका LRR 1000 अकॉर्डिंग इसके ना इक्वल हो जाए. ओके, ये आपको जरूर याद रखना है. ये मैंने बहुत अच्छा इसका एक वीडियो बना के आपको लिए अपलोड करके रखा है, आप इसका अलग से सेपरेट वीडियो जरूर देखें. Now the explanation is already given here. Initial deposit in banks is 1000 and our LRR is 20%. Means bank can lend 800 and keep only 200. Then with the new deposit of 800, bank keeps 20% as cash reserve and lend the balances 640. मैंने यहाँ पे 1000 लिया, आप कोई भी डिपॉजिट ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज भी डिफर कर सकते हैं, बट आपको कैलकुलेशन में डिफरेंसेस आएंगे. ओके, कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग होगी. नाउ सो ऑन, तो आप इसको जो है बता सकते हैं इसके थ्रू. Then formulas associated with credit creation, these are the formulas, you can go through that. The meaning of money multiplier, it is the number which total deposit can increase due to a given change in deposit, a total number of total deposits here. It is inversely related to legal reserve ratio. Okay, there is an inverse relationship between LRR and money creation. Okay, then the next is what, that is a most important topic again, central bank or RBI. Okay, so it is the apex or the supreme body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. RBI was established, अक्सर ये भी पूछा जाता है, in April 1, 1935. Okay, तो RBI 1935 करके ही आप याद रखिएगा. And under Reserve Bank of India Act passed in 1934. So India's का central bank क्या है आपका, that is the RBI, it is the Reserve Bank of India. Now the functions of central bank, first of all currency authority है, then banker to the government है, bankers, bank and supervisor, controller of money supply and credit. Okay, now this is very important, this topic, controller of money supply and credit, how central bank controls the money supply and credit, what are the instruments used, that is the quantitative and qualitative. Okay, so this is very important, that is repo rate, bank rate, reverse repo rate,
open market operations, legal reserve requirements at a CRR and SLR, देन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप इसको प्लीज जरूर से देखिएगा। ये समरी है तो इसको मैं समरी की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है, ताकि आप बस आपको पता चल जाए इन अ ग्लांस कि क्या क्या चैप्टर में आपने पढ़ा है ना। क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी भी आपके टूल्स बोल सकते हैं, मॉनेटरी मेजर्स भी कह सकते हैं उसको, मॉनेटरी पॉलिसी भी है। ओके, सो ऑल दीज आर क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। क्वांटिटेटिव मेथड्स, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, whereas qualitative methods, margin requirements, moral suasion and selective credit control। तो इनको हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो कैसे मनी सप्लाई आपका बढ़ेगा घटेगा, जब आपको करना होगा तो आरबीआई इससे इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके करता है। ओके, तो नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके थ्रू भी आप आराम से अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ओके, मीनिंग सेंट्रल बैंक apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country, whereas commercial banks the main function is to accept deposits, granting loans and making investment। ये फर्स्ट हमने मीनिंग में ही आपको बता दिया था, राइट। देन स्टेटस क्या होता है इसका, इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन वेयर एज इट इज अ यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक और आरबीआई। ओके, सेंट्रल बैंक बोलो आरबीआई बोलो द सेम थिंग। ओनरशिप का, that is central bank is owned and governed by the government, whereas it is run through the or owned government और द प्राइवेट सेक्टर। कमर्शियल बैंक दोनों से चलता है, राइट। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव। कमर्शियल बैंक जब प्राइवेट लोग चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इनका एम। ओके, देन इशू ऑफ करेंसी, सेंट्रल बैंक हैज द अथॉरिटी, हैड द सोल monopoly and issue of in issue of currency, whereas commercial banks has no power to issue currency, right। then public dealing, central bank does not deal directly with the public, ये commercial बैंक से लिंक रखते हैं, ठीक है, पर सेंट्रल बैंक। वेयर कमर्शियल बैंक डील्स डायरेक्टली विद द पब्लिक, यानी कि जो हम आम पब्लिक जो होती है जाके कहाँ डिपॉजिट करती है, टू द इन द कमर्शियल बैंक्स। ओके, the number of banks, there is only one central bank in a country, that is in India we have RBI। Okay, and in commercial banks there are number of commercial banks in India, for example State Bank of India, PNB। Okay, so Axis Bank, कुछ भी आप कोई भी बैंक इसमें ले सकते हैं commercial banks। I hope you understand it very well। Please go through this chapter, it's only a theoretical part। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस एक मनी मल्टीप्लायर का एक क्वेश्चन है, वो मैंने आपको एग्जांपल्स, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है देन यू कैन इजीली उसको आप क्रैक कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, और ये बहुत ही स्कोरिंग आपका ये है दिस चैप्टर। ओके, so go through it and keep learning and keep growing। Thank you for watching।